हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माफ़ी चाहूँगा इतने दिन से ना आने के लिए। हेलो शशांक भाई, स्पेशली सॉरी टू यू कि आप हमेशा इंतज़ार करते रहे। भाई स्टार्ट करो। स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। हेलो, पहले तो मुझे ये बताओ, आज सबसे पहले जो मैंने मथुरा का व्लॉग डाला था देखा या नहीं? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। मेरी तो सिर्फ BFC है यार, क्या बात है। यशवंत पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवंत पाटिल भाई कैसे हो? शशांक भाई तो बढ़िया हैं, बिल्कुल एकदम मस्त। शशांक भाई के ताने सुन सुन के मैं आ चुका हूँ लाइव। अरे यार, एक्चुअली ना पता नहीं क्या वो कल का तो मैं सीन बताऊँगा, आप हंस पड़ोगे। मैं 9 बजे सोया कि मैं आराम से उठ जाऊँगा 11 बजे तक, सुबह 7 बजे उठा फिर। इसलिए जगह चेंज। हाँ यार, थोड़ा आज AC वेसी का काम चल रहा था ना, तो फिर मैंने अपना ये सिस्टम इधर को कर दिया, और फिर वीडियो वगैरह एडिटिंग करने में इतना टाइम लग गया कि मैंने इसको सीधा ही नहीं किया। थंबनेल अभी देखा, वीडियो ओपन नहीं देखी। थंबनेल ओपन, अच्छा थंबनेल देखा, वीडियो नहीं देखी। अरे भाई, कब देखोगे वीडियो? चलो, तो लेसन नंबर 2 चल रहा था। हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे अमीर बनाया जाए। They breathe a sigh of relief. Their credit cards are paid off. They have now folded their consumer debt into their home mortgage. Their payment go down because they extend their debit over 30 years. It is the smart thing to do. Their neighbor calls to invite them to go to shopping. तो देखो, जैसे कि हम लोगों को लगता है कि भाई हमने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया और हमें 30 दिन की छुट्टियां मिल गई कि अब हम 30 दिन बाद भरेंगे। अरे भाई, ये भी तो सोचो ना, डेब्ट भी तो लग रहा है, पैसा भी ज़्यादा भी तो लग रहा है, इंटरेस्ट पे भी तो है। और ऐसा करते करते जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने लग जाओगे तो उसको चुकाना भी तो है मेरे भाई। 20 years ago today, credit card debt today, based on 2016 stats, US consumer credit card debt is at an all-time high, 779 billion. Is it all bad debt or good debt? Do you know the difference? क्या ये अच्छा डेप्ट है या फिर बेकार डेप्ट है? क्या आपको अच्छा उधार और बेकार उधार के बारे में कुछ पता है? So, they promise themselves they will just window shop, but they take a credit card just in case. अब जैसे आपके दोस्त हैं, आप लोगों को पता है कि भाई जब वो बुलाते हैं तो आप बाहर जाते हो तो कपड़े खरीदते हो, नहीं भी खरीदते तो बाहर जाके कुछ ना कुछ खर्चा तो हो ही जाता है। चाहे आप ऑटो लो, कैब लो, मेट्रो लो, बस लो, है ना, पैसा तो खर्च होता है। फिर उसके बाद अगर आप लोग पार्टी करने चले गए तो थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो ये समझो इस बात को, ठीक है। अंदर से पूछो कि उन पैसों की आपको सख्त ज़रूरत है, मतलब किस चीज़ में? भाई, इंडियन फुटबॉल तो टॉप पर चल रही है इस साल, बड़ा बिजी है इंडियन फुटबॉल। एक चीज़ ख़त्म हुई तो दूसरी, फिर से तीसरी। अपन सपोर्ट कर रहा है, अभी ISL देख रहा है, अभी हीरो कप देख रहा हूँ। क्या बात है, तब भी कोई मैसेज नहीं किया, सो गए थे। थंबनेल अभी देखा, वो वीडियो को नहीं। सॉरी शशांक भाई, स्पेशली सॉरी टू यू ब्रदर। अरे भाई, कल तो मैं कैसे सोया मुझे पता ही नहीं चला। I run into this young couple all the time. Their names change, but their financial dilemma is the same. They come to one of my talks to hear what I have to say. They ask me, "Can you tell us how to make more money?" They don't understand that their trouble is really how they choose to spend the money they do have. It is caused by financial illiteracy and not understanding the difference between an asset and a liability. More money seldom solves money. Sorry. More money seldom solves someone's money problems. Intelligence solves problems. हमेशा याद रखना, जो आपका तेज़ दिमाग है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। There is a saying a friend of mine uses over and over: people in debt. If you find you have dug yourself into a hole, stop digging. As a child, my dad often told us that Japanese were aware of 3 powers: the power of sword, the jewel and the mirror. ठीक है, जैपनीज़ को पावर ऑफ स्वॉर्ड के बारे में पता चल चुका है, ज्वेल्स के बारे में चल चुका है, और मिरर की पावर के बारे में पता चल चुका है। द स्वॉर्ड सिम्बलाइज द पावर ऑफ वेपन। जो स्वॉर्ड है मतलब तलवार है, वो पावर ऑफ वेपन दिखाती है।
अमेरिका हैज़ स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन वेपन्स. अमेरिका ने बहुत पैसा खर्च किया वेपन्स पे. बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ पावरफुल मिलिट्री प्रेजेंस इन द वर्ल्ड. और आज यूएस की मिलिट्री पूरी दुनिया जानती है क्या खतरनाक मिलिट्री है उनकी. द ज्वेल सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ मनी. और हीरे जवाहरात पावर ऑफ मनी को दर्शाते हैं. देयर इज सम डिग्री ऑफ ट्रुथ टू द सेइंग, रिमेंबर द गोल्डन रूल, ही हु हैज़ द गोल्ड मेक्स द रूल. जैसे कि आप लोग जानते हो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही गद्दी पे राज करता है. हेलो सपना जमनानी जी, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द चैनल. थैंक्स अ लॉट. पूरे 9 दिन तक अमन भाई नहीं आए, आज आए तो आज कोई नहीं आया. मैं आई हूँ. मैं तो विशाल भाई से कहने वाला था कि ये अमन रावत चैनल की ओनरशिप मुझे दे दें, अब मैं संभालूँगा इस चैनल को. अच्छा संभालना यार, ज़रूर संभालना. एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस चैनल की ओनरशिप आपको दे दूँगा, ठीक है. फिर साथ बैठ के लाइव करना है या फिर अकेले करना. चलो आगे बढ़ते हैं. It is called by financial literacy. They don't understand that the trouble is really how they choose to spend the money they do have. It is caused by financial illiteracy and not understanding the difference between asset and liability. हम लोग नहीं समझ पाते भाई क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है, ठीक है. The mirror symbolizes the power of self knowledge. अगर मेरे सामने एक मिरर रखा हो तो मुझे पता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता. दिस इज सेल्फ नॉलेज. अकॉर्डिंग टू जापानीज लेजेंड वॉज द मोस्ट ट्रेजर्ड ऑफ द थ्री. ऑल टू ऑफ्टन द पुअर एंड द मिडिल क्लास अलाउ द पावर ऑफ मनी टू कंट्रोल them by simply getting up and working harder, failing to ask themselves if what they do makes sense. They shoot themselves in the foot as they leave for the work every morning. By not fully understanding money, the vast majority of people allow its awesome power to control them. If they use the power of the mirror, they would have asked themselves, does this make sense? All too often, instead of trusting their inner wisdom, that genius inside, most people follow the crowd. They do things because everybody else does them. They conform. Rather than question, often they mindlessly repeat what they have been told. Diversify. Your home is an asset. आपका घर एक एसेट है. Your home is your biggest investment. जैसे कि बताया जाता है कि घर आपका बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. You get a tax break for going into greater debt. Get a safe job. Don't make mistakes. Don't take risk. यही समझाया जाता है कि एक सेफ जॉब ले लो. Don't make mistake. गलतियाँ मत करो, रिस्क मत लो. It is said that fear of public speaking is a fear greater than death of most people. Death for most people. ठीक है. पब्लिक में बोलना मरने से ज़्यादा डरावना होता है, ऐसा कुछ किसी लोगों के लिए. कि बोल दो कि मार दो मुझे, पर मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मतलब पब्लिक में लोगों के बीच खड़े होकर बोल नहीं सकता. स्कूल में लगभग आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा. आप में से कोई होगा जिसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है. मतलब स्टेज में मतलब जाना, वहाँ पर कुछ पोएम बोलना या गाना गाना, डांस करना, ऐसा करने से किसी को डर भी लगता होगा. तो वो कहते होंगे भाई मार दो पर मैं जाऊंगा नहीं स्टेज पे. पहले मेरे साथ ऐसे ही स्टेज फोबिया. It is said that fear of public speaking is fear greater than death for most people. According to the psychiatrist, the fear of public speaking is caused by the fear of ostracism, the fear of standing out, the fear of criticism, the fear of ridicule, and the fear of being an outcast. The fear of being different prevents most people from seeking new ways to solve their problem. That is why my educated dad said the Japanese valued the power of mirror the most, for it's only when we look into it and we find the truth. Fear is the main reason that people say play it safe, that goes for anything, be it sports, relationship, careers, or money. It is that same fear, the fear of ostracism, that causes people to conform to and not question commonly accepted opinion or popular trends. Your home is an asset.
get a bill consolidations loan, and get out of debt. Work harder. It's a promotion. Someday I'll be a vice president. Save money. Work harder. It's a promotion. Someday I'll be a vice president. Save money. When I get a raise, I'll buy us a bigger house. Mutual funds are safe. Many financial problems are caused by trying to keep up with the Joneses. Occasionally, we all need to look in the mirror and be true to our inner wisdom rather than our fears. By the time Mike and I were 16-year-old, we began to have problems in school. We were not bad kids. We just began to separate from the crowd. We worked for Mike's dad after school, and on weekends, Mike and I often spent hours after working just sitting at a table with the dad while he held meeting with his bankers, attorneys, accountants, brokers, investors, managers, employees. Here was a man who had left school at 13, who was now directing, instructing, ordering, and asking question of educated. अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा जो 13-14 साल में अपने स्कूल को छोड़ चुका था और आज वो मैनेजर्स, बैंकर्स, अटर्नी, अकाउंटेंट्स, इन्वेस्टर्स और अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दे रहा है कि ये कर लो, ये कर लो. वुमेंस फुटबॉलर की फ़ीस बढ़ चुकी है. अब इंडिया में प्रोजेक्ट डायमंड शुरू हुआ है. इसमें खिलाड़ियों पर मेहनत की जाएगी और उसमें डायमंड प्लेयर मतलब इंडिया का मेसी. क्या बात है. क्षेत्रीय 2.0 निकालेंगे. बहुत अच्छी बात है भाई. एशिया चैम्पियनशिप 14 मेडल आए हैं, 14 को ख़त्म हुई. क्या बात है. मैं तो विशाल भाई से. ओके, 2 लोग हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं. क्या बात है. अभी तक टोटल 5 लोग आए हैं. धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए. कह रहा सॉरी हम कहाँ थे. Here was a man who had not gone along with the crowd. He was a man who did his own thinking and detested the words, "We have to do it this way because that's the way everyone else does it." He also hated the word can't. If you wanted him to do something, just say, "I don't think you can do it." If you wanted him to do something, just say, "I don't think you can do it." 20 years ago today, who's on your team? Rich Dad surrounded himself with men and women who were specialists, attorney, accountant, brokers, and bankers, and Kim and I have done the same. Today, our team of advisors among our greatest assets. What's more important than money? The entrepreneur team. Who's on yours? Mike and I learned more sitting on his meetings than we did all our year of school, college included. Mike's dad was not book smart, but he was financially educated and successful as a result. He told us over and over again, an intelligent person hires people who are more intelligent than he is. So Mike and I had the benefit of spending hours listening to and learning from intelligent people. But because of this, Mike and I couldn't go along with the standard dogma our teachers preached, and that caused problems. Whenever the teacher said, "If you don't get good grades, you don't do well in the real world," Mike and I just raised our eyebrows. When we were told to follow set procedures and not deviate from the rules, we could see how school discouraged creativity. हम लोग सब जानते हैं कि स्कूल में भाई क्रिएटिविटी का नामो निशान नहीं है. We started to understand why our rich dad told us that school were designed to produce good employees. स्कूल जो है वो एक अच्छे सरकारी क्या बोलते हैं, सरकारी जॉब दिला सकता है आपको, प्राइवेट जॉब अच्छी दिला सकता है, बट क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी है स्कूल में. We started to understand why our rich dad told us school were designed to produce good employees instead of employers. ठीक है, स्कूल एम्प्लॉयज़ बनाता है, एम्प्लॉयर्स नहीं निकालता. ओकेजनली माइक और आई वुड आस्क अ टीचर्स, how
what we studied was applicable in the real world. जो हमने पढ़ा वो हम real world में कैसे लगाएं, और why we never studied money and how it worked. To the later question, we often got the answer and money was not important. That if we excelled in our education, the money would flow. The more we knew about the money, power of money, the more distance we grew from the teachers and our classmates. My highly educated dad never pressured me about my grades, but we did begin to argue about money when the time I was 16. I probably had a far better foundation with money than both my parents. I could I could keep books. I listened to the tax accountant, corporate attorneys, bankers, real estate bankers, and investors, and so forth. By contrast, my dad talked only to the other teachers. One day, my dad told me that our home was his greatest investment. A not to please argument took place when I showed him why I thought a house was not a good investment. I showed him why I thought a house was not a good investment. तो आज हमारे साथ दो लोग आए, धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे साथ निकालने के लिए. थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग. शशांक भाई, आई विल मिस यू. सपना जमनानी जी, आई विल मिस यू टू. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. कल आगे बढ़ेंगे. पेज नंबर 99. पेज नंबर 99, रिच डैड पुअर डैड. जो रिच डैड होते हैं वो लाइबिलिटीज़ समझते हैं घर को, जो गरीब पापा होते हैं वो एसेट समझते हैं घर को. The diagram above illustrate the difference in the perception between any rich dad and my poor dad when it came to their home. One dad thought his house was an asset and the other dad thought it was a liability. I remember when I draw the following diagrams for my dad, showing him the direction of the cash flow. I also showed him the ancillary expenses that went along with owning the home. A bigger home meant bigger expenses, and the cash flow kept going out through the sequence expense column. अब बाय बाय बोलने का समय आ चुका है. कल पेज नंबर 100 से पढ़ेंगे, ठीक है. लव यू ऑल.